Good afternoon, dear student. Today I will discuss about the basic chemistry and the calorific value of the fuel like LCB, SCB and the combustion equation. This is the part of the unit 5 and the subject name is the thermodynamics. It is the second lecture. फ्यूल्स सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसा कि आपको पता है जो फ्यूल का कंबशन है वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद होता है, जो कि लार्ज अमाउंट में हीट को जनरेट करता है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से किया जाता है. डिपेंड्स ऑन द हाउ मच अमाउंट ऑफ द हीट वुड बी जनरेटेड. And this definition does not include the nuclear fuel because it cannot be used easily by a common man. The various fuel used economically are the wood, coal, kerosene, petrol, डीजल, केरोसिन, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, नेचुरल गैस, ये सारी जितने भी फ्यूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं. क्लासिफिकेशन जो रहता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल का रहता है. 3 तरह के फ्यूल होते हैं, ये आपके दिखाई दे रहे हैं फ्यूल्स. ओरिजिन्स, फिजिकल स्टेट्स, नेचुरल और प्राइमरी. इस टाइप के फ्यूल जो है वुड के रूप में है. आपके लिक्विड फ्यूल आप जो देख रहे हैं ये सॉलिड फ्यूल है, ये लिक्विड फ्यूल है, ये आपका गैसेस फ्यूल है. सॉलिड फ्यूल में आपका सेमी कोक, चारकोल और लिक्विड फ्यूल के रूप में पेट्रोल, केरोसिन गैस, ऑयल, टार, एल्कोहल. नेचुरल गैस में प्रोड्यूसर गैस, कोक, ओवन गैस, वाटर गैस. ये सब जितने भी आपके नेचुरल टाइप के सोर्सेज हैं फ्यूल के जो कि डिस्कस किए हैं मैंने. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आप देखेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट है कंबशन की, दूसरी इग्निशन टेम्परेचर है. तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबशन रहती है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस पर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक इट इज द प्रॉपर्टी हाउ मच अमाउंट ऑफ द हीट वुड बी प्रोड्यूस आफ्टर द कंबशन. Ignition temperature, flame temperature and the flash and the fire point is the another physical properties. These are the requirement. फिर another physical property knocking, specific gravity, cloud and the pour point, viscosity, coke number. The chemical properties, these are the include the compositional analysis of fuel for solid and the liquid fuels, presence of elements such as the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and the sulfur, percentage of the moisture, percentage of the volatile matter. For gaseous fuel, percentage of the combustible gases, carbon monoxide, hydrogen, CH4, C2H4, C2S6, C4H10, hydrogen sulfide. जो नॉन कन्वेंशनल गैसेस रहती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. कैलोरीफिक वैल्यू की यदि बात करेंगे तो जितनी भी यूनिट्स हीट की इवॉल्व रहती हैं ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ द फ्यूल, वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में आनी आती है. ब्रिटिश थर्मल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए. जो कैलोरीज रहती हैं दैट इज द रिक्वायर्ड ऑफ द रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम द 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड. हाई एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, दो तरह की कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं. जिसमें ज़्यादा हीटिंग वैल्यूज रहती हैं उसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. जिसमें कम कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यूज रहती हैं उसे लो या नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. तो शॉर्ट फॉर्म में एससीबी या जीसीबी बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू के लिए, लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू के लिए एलसीबी या एनसीबी बोलते हैं. तो डेफिनेशन के रूप में यदि आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस when 1 unit of the fuel has been burned completely and the combustion produced have been cooled to the 16 degree centigrade or the 60 degree Fahrenheit, that is called a high calorific value. So LCB, it is the net heat produced when the unit mass or the volume of the fuel is completely burned and the products are allowed to the escape, that is called LCB. So net or low LCB, yeah, low calorific value, that is the gross calorific value minus of the loss due to the water form, or the gross calorific value minus of the mass of the hydrogen multiplied by the 9 into the 9 latent heat of the steam, that is the 587 calorie per gram, because one part of the weight of the hydrogen produces the 9 parts 1 plus 8 by the mass of water. The calorific values of the fuel, that is the example determined theoretically by the Dunlop formula or the Davis formula, and the Dunlop formula can be expressed as a formula by SCB is equal to 1 by 100 in the bracket of 8080 C plus the 34,500 hydrogen minus of the oxygen by 8 plus of the 2240 sulfur, where C is the percentage form of the carbon
H is the percentage of the hydrogen, and the O is the percent of oxygen, and S is the percentage of the sulfur. Oxygen and fuel is in a combined state as a water and hence does not contribute to heating value of the fuel. That means the LCV is equal to the SCV minus of the 0.09 H percentage into the 587 calorie per gram, that is called the LCV. Bomb calorimeter, which is basically using for the measuring the heating values, higher calorific value and the lower calorific value. This is presented in the diagram. This is the steering. When is steering is done, some work is obtained. Thermometer measuring the temperature, steel bomb sample of the disc, and the ignition coils. Some of the another parameter which are using for the requirement of the calorific values to be required and measure. This is the parameter which are using in the pump calorimeter. Let X is the mass in the gram of the fuel taken in the crucible. Capital W is the mass of water in the calorimeter. Small w is the water equivalent in the gram of the calorimeter. Steer thermometer pump. T1 and T2 is the initial final temperature. L is equal to the higher calorific value, and then heat liberated by the burning of fuel, that is the small x into L. Heat absorbed by the water in the apparatus is equal to capital W plus small w, T2 minus of T1. But heat liberated by the fuel, that is the heat absorbed by the water apparatus, so that small x into L is equal to the capital W plus small w into the T2 minus of T1, that is the L is equal to capital W plus small w, T2 minus of T1 by X calorie per gram or kilocalorie per kilogram. This is the mathematically expression. And the if H is equal to the percentage of the hydrogen in the fuel, 9H by 100 gram is equal to the mass of water from the 1 gram of the fuel is equal to 0.09 H gram. So heat taken by the water in forming of the steam is equal to 0.09 H into the 587 calorie. LCV is equal to the SCV minus of the 0.09 H into the 587 calorie per gram. By considering the fuse wire correction, acid correction and the cooling correction, this is the mathematical expression represented here. These are the property according to the fuel types: solid fuel, liquid fuel, and the gaseous fuel. Type of the properties are given: calorific values, specific gravity, ignition point, efficiency, air required for the combustion, use in the IC engine, mode of supply, space for the storage, relative cost, care in the storage and the transport. These are the parameter. These are the property on which the solid, liquid, and the gaseous fuel are we compare. So low, higher, and the highest on the basis of calorific value, in the basis of the efficiency, poor, good, and the best. तो बेस्ट फ्यूल फॉर द एफिशिएंसी इट इज अ सुटेबल द गैसेस फ्यूल, जो कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देता है. एंड कैलोरीफिक वैल्यू की बात की है तो गैसेस फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ज़्यादा रहती है कंपेरियन टू द सॉलिड फ्यूल. तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइएस्ट रिजल्ट एंड द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, द गैसेस फ्यूल आर द मोस्टली एंड द मैक्सिमम जगह जो आप देखेंगे वो गैसेस फ्यूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो इट कैन बी यूज by the nature, by the method, by the application and the by suitability. Everything, every aspect जितने भी आप देखेंगे तो गैसेस फ्यूल में आपको ज़्यादा बेनिफिट नजर आएंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, सुटेबिलिटीज, ये सारी कंडीशंस जो आप देखेंगे उसके बेस पे गैसेस फ्यूल इज द बेस्ट फ्यूल. इट कैन बी यूज, इट कैन बी पाइप्ड, इट कैन बी वेरी हाई स्पेसियस एंड इट कैन बी ग्रेट केयर. बट यदि आप ड्रॉबैक के रूप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट है. यदि आप देखेंगे तो कॉस्टलियर पड़ता है थोड़ा सा कंपेरियन टू द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल. बट अनदर पैरामीटर यदि आप उस केस में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं. ठीक है. कंबशन की बात करेंगे तो कंबशन की जैसे कि हमने बताया है कि कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद होती है. जब फ्यूल को एयर के कांटेक्ट में आके प्रोसेस की जाती है तो उसको हम कंबशन की प्रोसेस बोलते हैं. अब कंबशन दो तीन तरीके से होता है: लो कंबशन, मीडियम कंबशन, हाई कंबशन, ऐसा भी है. तो जहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ अ वेरी वेरी लेस और एयर रिक्वायर्ड जो है कंप्लीट कंबशन ऑफ कंपाउंड्स की जो रहती है वो कम रहती है, उसको हम कंबशन की रिएक्शंस के रूप में देखते हैं, कंबशन इक्वेशन के रूप में देखते हैं. तो दीज आर द कंबशन इक्वेशन. व्हेन द कार्बन इज बर्निंग विद द ऑक्सीजन,
presence of the oxygen, that is called a CO2. And when the hydrogen and oxygen whenever the combined, that is called a 2 hydrogen oxide. And when the sulfur and the oxygen is combined, that is called a sulfur oxide. These are the equations. Simultaneously number of equation will be used. These are the another equation by the volume, by the weight. Another equation will be used when the carbon, if the 12 gram it is used with the oxygen of the 32 gram makes a carbon dioxide, that is called a 44 gram. And when the hydrogen makes up with the hydrogen oxygen, that is of the 4 gram of the hydrogen, and the two molecules of the hydrogen, and the oxygen is the 32 gram, that makes the hydrogen oxide, that is a 36 gram. Similarly, for the sulfur and the mix up with the oxygen, that is makes a sulfur oxide, 32 gram of the sulfur and the 32 gram of the oxygen makes a sulfur oxide, 64 gram. Calculate the oxygen required on the basis of the unit quantity of the fuel. Calculate the total oxygen required for the combustion and the subtract the oxygen which is present in the fuel. The oxygen calculated should be the converted into the air by knowing the air contains 23 parts by weight of the oxygen or 21 parts by the volume of oxygen. The average molecular weight of the air is the 28.94 gram. Then the calculate the weight and the volume of air required for the complete combustion of the 5 kg coal with the following composition that are given here in the equation form, in the mathematically form. This is the weight of element per kg of the coal, and the weight of air or oxygen required for the complete combustion in the kg. This is the represented here. The weight of the oxygen needed minus of the weight of the oxygen present. This is the 3.01. The air required for the complete combustion, that is a 3.01 into the 100 by 23 is equal to 13.08 kg per 1 kg of the coal. Air required for the 5 kg of coal, that is a 13.08 into the 5 equal to 65.40 kg. And the volume of air that is required of 28.9 kg of air is equal to the 22,400 ml volume at the NTP. That is the classification of the coal, peat, lignite, bituminous, anthracite, and the moisture, that is a 25, 24, 2. This is the table in which the presenting of the all the contents of the molecules or the other components, that is the carbon, hydrogen, oxygen, and the S percentage given in the table. Calorific value of the each content or each component is given, and the what is the use of the different types of the coal. Peat used for the power generation, lignite is the manufacturing of the producer gas, bituminous used for the metallurgical coke, anthracite used the boiler metallurgical fuel. Analysis of the coal, proximately analysis and the ultimately analysis. If the proximately analysis is done, moisture, S and the volatile matter, fixed carbon, that is the proximate analysis. Ultimate analysis, carbon and hydrogen, nitrogen, sulfur and the S. Proximately analysis is easy and the quicker, it gives a fair idea of the quality of the coal. Ultimately analysis को जो use किया जाता है for calculating the heat balance in the any process for which the coal is employed as a fuel. Moisture, it is determined by the heating about 1 gram of the finely powdered coal at the 105 degree centigrade to 110 degree centigrade for an hour. In electric oven, the loss in the weight is reported is due to the moisture. तो जो भी मॉइस्चर आपका रहता है वो लॉस इन वेट ऑफ द सैंपल इनटू द 100 डिवाइड बाय द वेट ऑफ द कोल टेकन. तो डिक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू होती है मॉइस्चर के आने से, कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है एंड टेक्स अवे ऑफ द हीट इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट. तो बहुत ज़्यादा जो हीट का जो नुकसान होता है वो मॉइस्चर के आने की वजह से होता है. वोलेटाइल मैटर के आने से कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, स्मोक फॉर्म होता है और एयर को पॉल्यूट कर देती है. तो ये वोलेटाइल मैटर का भी इफेक्ट है जो कि कुछ परसेंटेज या बोलना चाहिए कुछ टेम्परेचर पे होने पे दिखाई देता है. एस कंटेंट जो है ये भी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू को कम करता है, बर्निंग की प्रोसेस को स्लो करता है, या बोलना चाहिए जो एश के डिस्पोजल की एक प्रॉब्लम है वो हरदम बनी रहती है. तो जितना भी सैंपल रहता है एस का उसको हम एक क्रूसिबल उसमें लेते हैं और कोल के साथ में कंप्लीटली बर्न कराते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कितने परसेंटेज ऑफ एस उसकी निकल के आ रही है. फिक्स कार्बन, परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन जो है उसको भी हम चेक करते हैं.
तो कार्बन के होने से यदि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिक्सअप होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो भी एक प्रॉब्लम बनी रहती है. Then the determination of the carbon and the hydrogen accurately weighted coal sample is the one in the current of oxygen in a combustion apparatus which is heated to about 350 degrees centigrade, and the carbon and hydrogen of the coal are converted into the water vapor and the carbon dioxide. The product of the combustion are the absorbed in the nitrogen dioxide. After complete absorption of the hydrogen and hydrogen oxide and the carbon dioxide, the tubes are again weighted. These are the mathematically expression or the chemical equations which are given: percentage of the carbon, percentage of the hydrogen, determination of the nitrogen, which is represented by the these methods, determination of the sulfur, it is represented by the equations. This is the chemical equations. Importance of the ultimately analysis: carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and the oxygen basis. Carbon की basis पे greater the percentage of the carbon, better is the quality. Hydrogen की base पे most of the hydrogen in the form of moisture and the volatile matter. Nitrogen does not burn, hence it has no CV. Sulfur, it increases the CV but causes a SOx. Oxygen, most of the oxygen is the form of moisture. This is the finally. So this is the today lecture. If you have any doubt, please ask me.